Now, any doubt whatever we have done yesterday? हेलो Hello. Any मैडम doubt whatever? मैंने Yes. आज वो आर स्टूडियो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है लैपटॉप में। ठीक है, कोई बात तो नहीं। 4.3.1 का वो वर्जन है। हाँ। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं आपका नहीं जो है कोई। वो 4.2 पॉइंट समथिंग है। हाँ, क्योंकि सर जो आर है इट्स बीइंग अपग्रेडेड एवरी टाइम। हम्म। तो हर बार जैसे ही नई चीज कोई भी नया इसमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है तो आपका वो अपडेट आ जाता है। और कई सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे अब मेरा 4.2 है, अब जैसे एक नया सॉफ्टवेयर आया है इसके अंदर, तो वो मेरे वाले में नहीं चलेगा। तो इफ आई वांट टू गो विद दैट पैकेज, मेरे को फिर से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं आर खोलती हूँ वो हमेशा मुझसे पूछता है कि आपको अपडेट करना है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे को आज क्लास लेनी थी तो मैंने अभी इसको मना कर दिया कि आज अपडेट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे अपडेट। क्योंकि सर जब आप अपडेट करते हो तो आपको बहुत सारे पैकेजेस दोबारा से री इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो उसके ठीक है। लिए मैंने आज उसको अपडेट नहीं करा। अदरवाइज जब भी कोई नया पैकेज आएगा, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू अपडेट इट और नॉट। आपने जो कल जो दिया था ना, मैंने वो दोपहर को ये किया, उसकी प्रैक्टिस की, तो वो एक कमांड जो है वो सक्सेस नहीं हो रही थी। कौन सी सर? आप इसके अंदर मेरे को एक बार कभी भी शेयर करके दिखा दीजिए। अब मैंने एंड मोबाइल से मीटिंग इंटर की है, अब लैपटॉप मेरे सामने है। हाँ, कोई बात नहीं सर, जब भी आपके पास टाइम हो, नॉट नाउ, मीटिंग के बाद भी आपके पास, जब भी आपके पास टाइम हो, मैं ठीक। आपको बता दूंगी कैसे करना है। ठीक कभी है भी मैम। जैसे आप फ्री हुए, मैं फ्री हुई, तो कभी भी मैं टीम्स पे आपके साथ या जूम के ऊपर, मैंने जूम पे इसलिए नहीं किया सर, वो 40 मिनट में बंद हो जाता है। टीम्स मेरा पेड है, तो ये आप कभी भी कितने भी टाइम के लिए कर सकते हो, दैट्स व्हाई मैंने टीम्स पे ऑप्ट करा। ठीक है तो मैम। आपको जब भी हो, आई कैन अरेंज फॉर एनीवन। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इस ग्रुप में मिल रहे हैं, वी आर देयर। कभी भी आप मेरे से ग्रुप पे पूछोगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉल करोगे, या फिर आप कोई मीटिंग अरेंज करना चाहते हो, कोई डाउट है 5 मिनट्स 10 मिनट्स की, आई कैन डू इट। ठीक है ना मैम, थैंक यू। ओके, एनी डाउट टू एनीवन? अब प्लीज जो भी डाउट है प्लीज आस्क। So now everyone is familiar with R, as well as everyone is familiar with your data. And I have also sent the data. Everyone has downloaded the data in your system? Yes, ma'am. यस मैडम। Okay. Yes, ma'am. Any problem you face with the data? Now this is a paid software data and it will remain in your system. मतलब मैंने अपना पेड सॉफ्टवेयर आपको दिया है, अब आपके पास ये रहेगा, आपको अब स्टेटा आपके पास से कहीं नहीं जाएगा। मतलब ये ट्रायल वर्जन नहीं है, ये थ्रू आउट दी लाइफ, जब तक आपके पास आपका लैपटॉप या सिस्टम है तब तक ये रहेगा आपके पास। ओके। कल हमने करा था कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म, हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट इट। सो प्लॉटिंग में एनी डाउट? प्लॉटिंग में एनी डाउट? वो कमांड या मीन्स वो याद नहीं रहा कौन से वाला सर? वो प्लॉटिंग का जो आप कर रहे थे। वो तो सर ठीक है। मैं आपको सारी कमांड्स, आई विल गिव यू द पीपीटी, उसमें सारी कमांड्स लिखी होंगी। व्हाट यू कैन डू, सी कमांड जो छोटी छोटी कमांड्स है वो याद हो जाती हैं, और क्योंकि मैं डेली बेसिस पे पढ़ाती हूँ तो मेरे को याद हो जाती है कमांड। आप क्या कर सकते हो सर, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सारी कमांड्स को लिख सकते हो, या फिर अपनी इसी के अंदर एक डू फाइल बना सकते हो। इसी में आप अपने आर में भी ना एक डू फाइल बना सकते हो, जिससे आपका हर चीज आपके पास वहां सेव रहेगी। आपको सीधा बस उस पर क्लिक करना है और आप कभी भी उस पर काम कर सकते हो। जैसे अगर आप, ये मेरी डू फाइल है, अगर मैं यहाँ पर, अगर मैंने एक यहाँ से, आप क्या करोगे, ये प्लस का सबस्क्रिप्ट ये खोल लोगे, आर स्क्रिप्ट एक खोल लो, और यहाँ पर आप सारी चीजें सेव कर लो। आप जो भी कमांड्स है यहाँ पे लिख के अपने ब्लैक बोर्ड पे सेव करके इसको सिस्टम पे रख दो। तो आपके पास से ये कहीं नहीं जाएगी, आपको कहीं याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है।
Hello, ma'am. Yes. Ma'am, actually, I have a question. I just want to know कि आपको real time examples ऐसे मतलब कुछ रियल टाइम एग्जांपल in terms of like marketing field? Yeah, my area of अभी आप specialization is फिनिश marketing. मार्केटिंग, नो So, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अभी आप देखोगे हर टाइप के एग्जांपल्स आएंगे। okay, okay, ओके ओके। fine. yesterday what we did, I'll just have a quick revision कि हमने लास्ट टाइम किया था कि we first thing is that we have to make a diagram. So yesterday we did how we are going to plot it, because जब भी आप कोई भी डायग्राम प्लॉट करते हो उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ आती हैं। हमने कल भी एग्जांपल लिया था, एक छोटे से बच्चे को अगर आप एक एप्पल, प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी है, कि आप अगर एक छोटे से बच्चे को एक एप्पल दिखाते हो तो वो एप्पल से जल्दी समझेगा, इरिस्पेक्टिव अगर आप उसको कहोगे कि APPLE आपका एप्पल है तो वो एप्पल वर्ड नहीं समझेगा, दैट मीन्स अल्फाबेटिकल नहीं समझेगा, वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन समझेगा। So always try whenever you are writing any research paper or whenever you are teaching in a class, the first thing is you have to show it with the diagram. तो हमने कल सिर्फ डायग्राम्स करे थे। डायग्राम्स में हमने सीखा था हम लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं बोथ इन स्टेटा एंड आर, प्लस हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ हिस्टोग्राम एंड हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ नॉर्मल कर्व, राइट। नाउ नेक्स्ट चीज है हमारा कॉर्लेलोग्राम। हम कॉर्लेलोग्राम पे आते हैं। कल हमने ये सारे कर लिया था। नाउ कॉर्लेलोग्राम, कॉर्लेलोग्राम हमारे को, अब किसी को कॉर्लेलोग्राम का थोड़ा सा आइडिया है? नो एनीवन मैडम। हैविंग एनी आइडिया? ठीक है, हम एक छोटे से एग्जांपल से करते Yes, हैं। मैं ma'am. आपसे कहती हूँ, है किसी को आइडिया? Yes, ma'am. This is kind of a relationship between previous values. So Yes. वो जो ACF होता है हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, उसके अंदर हम एग्जैक्ट पिछली जो हमारी वैल्यूज है उनके साथ में कोरिलेशंस को जो है प्लॉट करते हैं। और PACF जो होता है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, उसके अंदर जो है हम एग्जैक्टली पीछे की नहीं लेकिन कुछ गैप के साथ में हम फॉलो करते हैं। हाँ, तो अभी वो तो हम जब मैं अरिमा कराऊंगी उसमें डिटेल में कर लेंगे, लेकिन ऑटो कोरिलेशन होते हैं एक छोटे से एग्जांपल से करती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि आज आप बहुत खुश हो, ठीक है, इसका कोई तो रीजन होगा व्हाई यू आर हैप्पी इन टुडेज डे। मे बी प्रीवियसली लेट्स से मैं कहती हूँ कि कल आपको कोई अचीवमेंट मिली और आज आप बैठे हो और आपको वो अचीवमेंट सोच सोच के खुशी हो रही है। तो दैट मीन्स आज की जो आपकी खुशी है उसका रीजन क्या है? आपका प्रीवियस डे का अचीवमेंट। तो दैट मीन्स आज आप खुश क्यों? क्योंकि आप कल आपको कोई अचीवमेंट मिली थी या फिर आपको अचीवमेंट मिली थी 2 दिन पहले से। तो दैट मीन्स आज की खुशी का रीजन आपके पिछले 2 दिन में छुपा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं लैग वैल्यू, कि जो हम अपने आप से ही रिलेट कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप आज खुश हो मे बी ड्यू टू योर सम अदर अचीवमेंट, मे बी आपका बच्चा है उसकी वो क्लास में फर्स्ट आया, उसके बारे में सोच के आप आज खुश हो। दैट मीन्स आप अपनी प्रीवियस अचीवमेंट को लेके नहीं खुश, आप आज अपने बच्चे की अचीवमेंट को लेके खुश हो। दैट मीन्स आपका बच्चा हो गया एक अदर फैक्टर, उसको लेके उसके प्रीवियस को लेके खुश हो। तो दैट मीन्स ये सारी टर्म्स हमारी एक एरर टर्म में चली जाती हैं, जो जो हम मेजर नहीं कर पा रहे। जो हमारी हैप्पीनेस है हम इसको मेजर नहीं कर सकते, तो मैं इसको प्योर पैरामीटर्स में नहीं ले सकती, मेरे को इसको एरर टर्म में डालना पड़ेगा कि ये भी एक फैक्टर है। तो जब आप अपने प्रीवियस से ही रिलेट कर रहे हो अपने आप को, तो हम उसको बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन। मे बी एनीथिंग, किसी भी चीज में जब आप प्रीवियस से अपने आप को रिलेट कर रहे हो तो आपकी ऑटो कोरिलेशन हो जाएगी। ऑटो मीन्स अपने आप से, कोरिलेट मीन्स अपने आप से आप रिलेट कर रहे हो अपने आप को। नाउ ये जो आपका कोरिलोग्राम है ये आपको बताता है कि आप पिछले कितने दिनों से अपने आप को रिलेट कर सकते हो। और यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर आप इमीडिएटली प्रीवियस डे से रिलेट कर रहे हो या 2 दिन पीछे, 10 दिन पीछे रिलेट कर रहे हो, थोड़े दिन तक पीछे रिलेट कर रहे हो तो अच्छा है। लेकिन अगर ये कहता है कि मैं इन्फिनिटी तक रिलेट करता हूँ, तो दैट्स
दैट इज नॉट गुड। एक छोटे से एग्जाम्पल से क्या, मैंने कहा मेरी और आप, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरी और आपकी लड़ाई हो गई, तो लड़ाई का इफेक्ट मतलब मैं उस लड़ाई को 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक चला सकती हूँ। अगर मैंने उसको परमानेंटली चला दिया तो भाई फ्रेंडशिप तो टूट जाएगी। तो दैट मीन्स जब हम रिलेशनशिप करते हैं किसी के साथ तो वो इन्फिनिटी नहीं हो सकती, फाइनाइट होएगी। रिलेशनशिप खाली 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आप उसको याद रखोगे कि हमारा झगड़ा हुआ था, फॉर द लाइफ टाइम झगड़े को याद नहीं रखना। तो ऑटो कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन हमें बताता है कि हम पिछली कितनी लैग वैल्यू से रिलेटेड है। तो अगर आपकी लैग वैल्यू अनलिमिटेड आ रही है, इंफिनिटी आ रही है, तो दैट मीन्स आपका डेटा नॉन नॉर्मल है, नॉट स्टेशनरी है, जो अभी हम करेंगे। और अगर आपकी वैल्यू, आपका रिलेशन एक फाइनाइट टर्म तक आता है, तो दैट मीन्स वी आर हैविंग द स्टेशनरी वैल्यू, राइट? एनी डाउट? अभी हम स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी पूरा डिटेल में करेंगे। स्टार्ट करें? यू ऑल हैव योर एक्सेल? Okay, everyone has uploaded the Excel? Yes, ma'am. Now attach Yes, your ma'am. share price. Attach. Now first thing ACF. So command is very simple. आप चाहे R करो या फिर स्टेटा करो, आपको बस उसके एब्रीवेशन याद रखने हैं आपको। कल हमने जो करा था हिस्टोग्राम का एब्रीवेशन है हिस, सेम एब्रीवेशन आपका R में यूज होगा, सेम एब्रीवेशन आपका स्टेटा में यूज होगा। अब नेक्स्ट एब्रीवेशन पे आते हैं, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ACF। ACF आपको सिर्फ ACF इसकी एब्रीवेशन याद रखनी है, और हम इसका दे देते हैं N2 to 5 जो भी वेरिएबल हमारा नेम है। Now you are able to see the diagram? यस मैम। अब आप यहाँ पे ब्लू लाइंस देखो, एक आपका 0 के ऊपर जा रही है, एक 0 के नीचे आ रही है। ऊपर वाला है आपका अपर कंट्रोल लिमिट और नीचे वाला है आपका लोअर कंट्रोल लिमिट। और जितनी भी ये पैरेलल लाइन है, दीज आर स्पाइक। ये स्पाइक्स क्या बता रही हैं कि भाई कि हमने जो आज का जो रिलेशनशिप है उसके पिछले से भी पास्ट से रिलेशनशिप है, फर्स्ट ईयर से, क्योंकि ये मेरा डेटा डेली का डेटा है, तो फर्स्ट डे से भी रिलेशन है, सेकंड से भी रिलेशन है, थर्ड से भी, फोर्थ से भी। दैट मीन्स टिल 31 यहाँ शो कर रहा है, रिलेशनशिप उसका खत्म ही नहीं हो रहा। आपका रिलेशनशिप इन्फिनिटी है, मतलब ये मेरे स्टॉक प्राइस है, आज का स्टॉक प्राइस 5 साल पहले के स्टॉक प्राइस से भी रिलेटेड है, विच इज नॉट पॉसिबल। और आपकी सारी स्पाइक्स आपकी इन लिमिट्स को क्रॉस कर रही है। तो ये मेरे को साफ बता रहा है मेरा डेटा इज नॉन स्टेशनरी। मुझे कोई, अभी हमने टेस्ट नहीं सीखा, कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ डायग्राम बनाया है। तो माय डेटा इज नॉन स्टेशनरी। तो ACF से मुझे पता चल गया मेरा डेटा स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनैरिटी चेक करने के लिए ACF यूज करते हैं मतलब? नहीं नहीं नहीं, ACF इज वन ऑफ दैट। सिर्फ ACF यूज नहीं करते। ACF हमारा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। हम जब भी कोई रिसर्च पेपर लिखेंगे, हमारे पास 2 तरीके होते हैं करने के। पहला तरीका होता है हम उसको डायग्राम से करके दिखाते हैं, बिकॉज पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आर ऑलवेज गुड। उसके बाद हम उसको टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद T वैल्यू देखते हैं, T टेस्ट देखते हैं। तो उसके बाद हम रिसर्च पेपर में उसको वैलिडेट करते हैं।
दैट मीन्स जो हमने डायग्राम से देखा है उसको हम टेस्ट से भी वैलिडेट कर रहे हैं कि दोनों सही है। एक सिंपल सी चीज, आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपको पता है ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तो दैट मीन्स वो आप डेली क्लास में उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल गया वो इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी आप उसका एग्जाम लेते हो। क्यों लेते हो? उसको, उसकी इंटेलिजेंस को वैलिडेट करने के लिए कि हाँ ये बच्चा सच में इंटेलिजेंट है या नहीं, जबकि हमको क्लास में देख के पता चल जाता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। जो क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो पेपर में अच्छा परफॉर्म करेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि वो नहीं कर पाया, बच्चा अच्छा करेगा। तो दैट मीन्स हमने ये डायग्राम बनाया, इससे मुझे पता चल गया कि ये डेटा स्टेशनरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको वैलिडेट करने के लिए टेस्ट लगाऊंगी। ओके मैम। नेक्स्ट, PACF, partial autocorrelation function, and again your variable. Now again you can see that अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन हमेशा स्ट्रेट जाएगी। इसका मेन यूज हम जब अरिमा मॉडल करेंगे तब आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना, याद सिर्फ ACF डालना है, PACF डालना है। Now let's go with data. And you will see Stata और RAS, देखो दोनों सॉफ्टवेयर हैं, both will give you the same result. आपके ऊपर है आप किससे कंफर्टेबल हो। Now everyone has imported the file in Stata. Now what will be the command? ना स्टेटा को पता है कि मेरे को क्या करना है, ना आर को पता था। अब स्टेटा को हम क्या कमांड देंगे? नहीं, सबसे पहले आप इसको बताओगे स्टेटा को दैट माय डेटा इज टाइम सीरीज डेटा, तो टीएस सेट एंड डेट। आपको स्टेटा को भी क्या है, आर को भी, यू हैव टू इंस्ट्रक्ट दैट ऑन विच डेटा यू आर वर्किंग। आर में भी अभी आप देखोगे जब हम अलग अलग पैकेजेस यूज करेंगे तो हमें आर को बताना पड़ेगा कि हमें ये काम करना है, प्लीज इस वाली फाइल को खोलो। जैसे हमने कल करा था कि अगर मेरे को फाइनेंस पढ़नी है तो ऑब्वियसली मैं फाइनेंस की बुक खोलूंगी, मार्केटिंग की बुक में फाइनेंस नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली डेटा में हम बहुत सारे काम करते हैं, टाइम सीरीज भी करते हैं, पैनल डेटा भी करते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स का, तो हमको उसको पहले बताना पड़ता है कि हम अब टाइम सीरीज पे काम कर रहे हैं, आप टाइम सीरीज के सारे सॉफ्टवेयर खोलना, या फिर हम अब पैनल डेटा पे काम कर रहे हैं, पैनल डेटा पे खोलो। तो टाइम सीरीज का इसका एब्रीविएशन है टीएस, टाइम सीरीज सेट करो। मैंने इसको कहा टाइम सीरीज को सेट करो किसके अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने एक फीचर करा था कि हर चीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी। तो हमने बस इंस्ट्रक्ट करा है, इसने मुझे बता दिया कि हमारा डेटा 1 अप्रैल 2016 से लेकर 25 मई 2021 तक का है और डेली डेटा है, इसने मुझे सब बता दिया। अब इसमें अगर आपको ACF और PACF बनाना है तो इसकी आप कमांड लिखोगे कोरेलोग्राम, तो CORRG एंड देन योर वेरिएबल। आपके वेरिएबल्स यहाँ पर आते रहेंगे, आप किसी भी वेरिएबल का लिख दो, एंटर। अब आप देखो सेम डायग्राम इसने बना दिया, इसने आपको ये बता दिया है कि आपका इनफाइनाइट है, आपका डेटा स्टेशनरी नहीं है। डन। Okay, now descriptive statistics.
Any doubt in ACF and PACF? We are going to do it in detail. अभी सिर्फ आपको diagrammatic representation देखने, how we are going to make the diagram. So, madam, this autocorrelation function we are using only to test the stationary or something else? Just to test the stationarity. That means how much relationship is there, whether my today's value is related with the immediate previous value or 2 days back or 5 days back. What is your lag value? We are going to check all these things with ACF and PACF only. We have the software also. Software can also do it. We have the test also, but this is a diagrammatic representation. We can use the diagrammatic representation also. Now, can we start with the descriptive one? Okay, yesterday I told you descriptive. What do you mean by descriptive statistics? Anyone having any idea? मैम मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन। नहीं, ये तो आपने बता दिया, तो आपको पता है कि ये मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन हम करते क्यों है ये? आप हर रिसर्च पेपर में देखते हो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव होता है। चलिए एग्जाम्पल से करते हैं। कभी बच्चे को इंटरव्यू देते हुए देखा है, या आप भी जब कॉलेज में जाते हो इंटरव्यू देते हो, पहला क्वेश्चन क्या होता है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दैट मींस डिस्क्राइब योरसेल्फ। और जब भी आप अपने आप को डिस्क्राइब करते हो, क्या डिस्क्राइब करते हो? 8 से 10 साल बाद मैं क्या करूंगा उसको ये बताते हो? आप अपना नेम बताओगे, अपनी क्वालिफिकेशंस बताओगे, अपनी एक्सपर्टाइज बताओगे। दैट मीन्स आप अपना पास्ट उसके सामने बताते हो। जब भी आप अपने आप को डिस्क्राइब करते हो, आपका पास्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है। आप अपना रेज्यूम देते हो, अपने आप को डिस्क्राइब करके देते हो रेज्यूम के अंदर। आप फ्यूचर नहीं बताते उसके अंदर, अपना पास्ट बताते हो। तो दैट मीन्स दूसरा क्या कर रहा है, आपके पास्ट को देख के आपका फ्यूचर जज कर रहा है। वो पास्ट को देख के बता रहा है, जजमेंट देगा कि वेदर आई वांट टू कीप यू और नॉट। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई डेटा होगा, आप उसका पास्ट को स्टडी करो, और पास्ट को स्टडी करके आप फ्यूचर में जाओ। एग्जाम्पल दैट आई गेव यू येस्टरडे कि हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, सबसे पहले आपका हॉरोस्कोप देखेगा, या पामिस्ट के पास जाओगे, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो सबसे पहले आपका पास्ट आपको बताएगा। डॉक्टर्स के पास जाओगे, वो हमेशा आपसे प्रीवियस हिस्ट्री पूछेंगे आपकी। तो पहला कॉन्सेप्ट ही आपका प्रीवियस हिस्ट्री होता है। तो आप हमेशा अपनी प्रीवियस हिस्ट्री को पहले बताते हो। उस प्रीवियस हिस्ट्री को आप पहले स्टडी करते हो कि मेरा फ्यूचर हमेशा मेरी प्रीवियस हिस्ट्री पे रहता है। So that's why we always go with descriptive statistics. That means we are going to describe our data. हम पिछले से निकालेंगे कि भाई है क्या ये सारी चीजें। चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल, आपने कहा सबसे पहले आपका मीन आता है। मीन क्यों पढ़ते हैं? Why I'm going to study mean? या हमने कल नॉर्मल डेटा का कर्व बनाया, हम क्यों कर रहे हैं नॉर्मल डेटा? हम रिसर्च कर क्यों रहे हैं? बस ये थोड़ी है कि कोई भी टूल है, डाला निकाल दिया, कुछ भी इनपुट डाला आउटपुट निकाल देगा। मशीन है ये तो सॉफ्टवेयर है। रीजन क्या आप लिखोगे, क्या कोड क्या करोगे वहां पे? चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स से आप एक पिक्चर हॉल बनाना चाहते हैं, मूवी थिएटर आपने बनाया। अब आपका मेन एम क्या होगा? आप एक बिजनेसमैन हो, आपका मेन एम क्या है? मूवी थिएटर बनाने का, या कोई भी थिएटर है नॉर्मल, या फिर मैं कॉलेज के प्रिंसिपल हूँ या कॉलेज के ओनर हूँ, मेरे को ऑडिटोरियम बनाना है। मेरा मेन एम क्या होगा? बिजनेसमैन का मेन एम क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट कहाँ से आएगा? रेवेन्यू से। मतलब अगर मेरा एक मूवी हॉल है, मेरे को तो प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कहाँ से आएगा? जितनी टिकट बेचूंगी उतने से आएगा मेरा प्रॉफिट। दैट मीन्स रेवेन्यू जनरेशन होगी मेरी वहां से। और रेवेन्यू जनरेशन क्या होगी? जितनी टिकट्स बिकेंगी, और टिकट्स कितनी बिकेंगी? जितने ऑडिटोरियम में बैठने की कैपेसिटी होगी।
अगर मेरे ऑडिटोरियम में बैठने की कैपेसिटी 10 लोगों की है तो मेरी 10 ही टिकट बिकेंगी, मेरा रेवेन्यू 10 ही आएगा उसी में से, और खर्चा तो मेरा उतना ही है। भाई मूवी जितने की खरीदूंगी उतनी ही है, बिजली भी उतनी लगनी है, चाहे मेरा हॉल थोड़ा छोटा हो जाए या 10, उस हॉल के अंदर एक बंदा बैठ के मूवी देखे या 10 बंदे बैठ के मूवी देखे, मेरी इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी लगनी है। तो दैट मीन्स मेरा एक्सपेंस तो फिक्स है, मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है। तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? जितनी ज्यादा से ज्यादा मेरी सीट बिकेंगी। और दैट मीन्स अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने ऑडिटोरियम में ज्यादा से ज्यादा सीट्स लगानी है जिससे मेरे ज्यादा से ज्यादा सेल हो जाए और मेरे पास रेवेन्यू जनरेशन है, क्योंकि मेरा एक्सपेंस फिक्स्ड है, जितना रेवेन्यू होगा उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब हर कैटेगरी का बच्चा होता है, बच्चा भी पिक्चर देखने आता है, एडल्ट भी आता है और बुढ़ा भी आता है, लेकिन एक एज के बाद जाके हम सबकी हाइट रुक जाती है, हमारी हाइट इंक्रीज नहीं होती। छोटे बच्चे की छोटी है, लेकिन हाँ एक एज आई हाइट रुक गई। अब जब हम सब एडल्ट है, हमारी हाइट रुक गई है, तो दैट मीन्स आपको कोई इंडिविजुअल तो 5 फीट का मिलेगा, कोई 5.5 का मिलेगा, कोई 6 का मिलेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई इंडिविजुअल आपको 6.5 और 7 फीट का ही मिल जाए। ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, हाइट 7 फीट की भी है लोगों की। तो अब अगर मैं 7 फीट को भी इंक्लूड कर देती हूँ अपने डेटा के अंदर, डायग्राम से मुझे पता चल जाएगा कि ये बंदा 7 फीट का है, क्यों मेरा अलग से डॉट दिखाई देने लगेगा, ये 7 फीट का है। अगर मैं उसको डेटा में मीन में डाल देती हूँ, मीन निकालती हूँ, तो वो क्या करेगा, 7 फीट के मीन के हिसाब से मेरा जो एवरेज मीन आएगा वो अराउंड, अगर हम निकालने बैठेंगे तो वो ऑन एन एवरेज 5.8 5.9 पे ले जाएगा मेरा। और 5.8 5.9 का अगर मेरा मीन आ गया, क्योंकि अगर मैंने एक 7 फीट के बंदे को उसमें इंक्लूड कर लिया, तो उससे क्या होगा, मेरी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कम हो जाएंगी। मुझे पता है कि मेरे पास दो, मेरा एवरेज आ रहा है 5.8 5.9, मेरे को 2 सीट के बीच में इतना डिस्टेंस डालना है, लोगों की टांगे नहीं आएंगी, लोग बैठेंगे नहीं कंफर्टेबल। और अगर मैंने 5.8 5.9 की सीट में गैप रख दिया, तो मेरी नंबर ऑफ सीट, ऑडिटोरियम तो मेरा लिमिटेड है, स्पेस मेरे पास लिमिटेड है, सीट्स लगानी है, वो मेरी सीट्स कम हो जाएंगी। अब अगर मैं वो 7 फीट बंदे को, आउटलायर को निकाल के फेंक देती हूँ, मेरा मीन कम हो जाएगा, और उस कम मीन से क्या होगा, मेरी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी। मेरी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने से क्या होगा, मेरे पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा और मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स आपका एक गलत मीन आपका प्रॉफिट पे इफेक्ट कर सकता है। तो वी आर कैलकुलेटिंग मीन फॉर वेरियस रीजन। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बट वी आर कैलकुलेटिंग मीन सो दैट कि हमें ये पता चल जाए कि हमारे को रेवेन्यू जनरेशन में रोल क्या प्ले कर रहा है ये सारी चीजें। सिमिलरली वेरिएंस, जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हो, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन? हमारा मेन ये दो चीजें होते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। मीडियन निकालते हैं लेकिन उसका इतना यूज नहीं आएगा, मीडियन का बहुत कम जगह यूज आएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डिविएशन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन? व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? मैम डेविएशन फ्रॉम द मीन। डेविएशन फ्रॉम द मीन, दैट मीन्स आपका डिविएशन, जो भी आपका वेरिएशन है, जब आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर मेरा वेरिएंस आ जाता है, वेरिएंस मींस वेरिएशंस, कि दो लोगों के, अगर हम एग्जांपल लें मार्क्स का, कि दो बच्चों के मार्क्स में कितना वेरिएशन है, हमने कहा हर एक बच्चे का एक एवरेज निकाल दिया। हम क्लास में बच्चे को देखते हैं ना कि ये डफर है, ये होशियार है, क्यों है, एवरेज देख लेते हैं, ऑन एन एवरेज। कई बच्चों को बोलते हैं ये एवरेज बच्चा है, तो हमने देखा कि एक बच्चे के 50 नंबर आए, एक के 60 आए, एक के 70 आए, एक के 65 आए, तो हमने सोच लिया ऑन एन एवरेज सारे बच्चे 60 to 70 के बीच में लाई करते हैं। अगर किसी बच्चे के 30 आ गए, हम उसको बोलते हैं बिलो एवरेज, किसी के 90 आ गए, अबव एवरेज। तो ये जो 30 और 90 वाले होते हैं, इन पे हम स्टडी कभी भी नहीं करेंगे। अगर आपने इन पे स्टडी करी तो आपका फ्यूचर जब आप प्रिडिक्ट करोगे वो गलत हो जाएगा। ये मेरे दो आउटलायर्स हैं, इनको निकाल देना है मेरे को। अब अगर मैं इनका वेरिएशन देखती हूँ, अगर आपके 60 एवरेज है और 65 एक के मार्क्स है, तो उसमें देखो आप 5 का एवरेज है, किसी का 63 है, 3 का एवरेज है, उनके एवरेज नियर अबाउट है। लेकिन अगर मैं 90 के साथ देखती हूँ तो उसका एवरेज बहुत ज्यादा है। तो अगर आप 90 के साथ कंपेयर कर रहे हो तो आपको रीजन देखना है कि वाई द एवरेज, वाई द वेरिएंस इज
सो मच, उसका कोई तो रीजन होगा। मैंने आपको कल एक डायग्राम दिखाया था, ये वाला। अब आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक मार्केट का डायग्राम है, ये स्टॉक प्राइस जा रहे हैं, लेकिन सडनली वेरिएशन यहाँ पहुंच गया है, एकदम से प्राइस हाइक हुआ, वेरिएशन यहाँ आ गया, सडनली नेक्स्ट डे आपका प्राइस डाउन हो गया। तो दैट मीन्स अब बाकी सब में आप वेरिएशन देखोगे कम है। तो ये वाला जो वेरिएशन है, दिस इज ड्यू टू सडन शॉक, कुछ ना कुछ शॉक आया है जो इसकी वजह से ये वेरिएशन आया है। तो दैट इज अ पॉइंट, ये आपको स्टडी करना है रिसर्च के अंदर कि ये क्या शॉक था, क्यों आया ये वेरिएशन, ये शॉक क्या है। अगर फ्यूचर में सिमिलर शॉक आया, कोई सिमिलर सर्कमस्टांसेस है, लेट्स से मैंने कहा कोविड ही आया, एक दिन के लिए कोविड आया, या एक दिन के लिए किसी कंपनी ने अपना स्प्लिट कर दिया स्टॉक्स को, या उसने एकदम से डिविडेंड अनाउंस कर दिया, या फिर हमारा डीमोनेटाइजेशन हो गया, या फिर गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस कर दिया, लोगों को लगा बजट आ गया, हर चीज महंगी हो जाएगी, शेयर प्राइस में एकदम से इन्वेस्ट करा, तो थोड़े टाइम के लिए वो शॉक आया, लेकिन उसकी रिकवरी हो गई। तो वेरिएशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वेरिएशन, ज्यादा वेरिएशन क्यों है। नेक्स्ट डायग्राम अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर वेरिएशन आया, शॉक आया, लेकिन उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसने उसको वापस नहीं करा, उसने वहां पे एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ गया। तो ये सडन शॉक नहीं है, ये परमानेंट शॉक आ गया। ये हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइजेशन एक दिन के लिए तो हुआ नहीं भाई, डीमोनेटाइजेशन हो गया, स्टॉक प्राइस में चेंज आ गया, अब वो वापस नहीं आएगा। दैट मीन्स वी आर स्टडिंग वेरिएशन, व्हाई ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग, जिसके लिए हम वेरिएशन के लिए मेनली पढ़ेंगे हमारे आर्च एंड गार्च मॉडल। Okay, now how we are going to create your descriptive statistics. Now all the files are attached. Now for descriptive statistics, we have different packages. The first package that you have to download is your F basic. First package is F basic and second package is FinTS. FinTS. This is our second package that we have to download. So just download these packages and then library it. Library now library all these three packages. Done. Can we start? Can I start? Done. Everyone has downloaded these packages. नो मैडम। F basic. It is downloading. लाइब्रेरी में क्या लिखना है मैडम? लाइब्रेरी में पैकेज का नेम आप सिंपल लाइब्रेरी वर्ड यूज करो या रिक्वायर, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। दैट मीन्स हम आर को कह रहे हैं, अब हम इस पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो आप लाइब्रेरी टी सीरीज, टी सीरीज मैंने आपको कल बताया था, टाइम सीरीज, जितने भी हम टाइम सीरीज पे काम करेंगे सब टी सीरीज पे जाएगा। तो आप जैसे ही फर्स्ट 2-3 लेटर्स लिखोगे आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगा, इफ इट इज ऑलरेडी डाउनलोडेड।
लाइब्रेरी टी सीरीज, या फिर आप सिंपल इंस्टॉल कर लोगे। आप देखो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस एंड देन पैरेंथेसिस में पैकेज का नेम। अदरवाइज आप यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे फोर्थ विंडो में पैकेजेस है। अब पैकेजेस पे आप टिक मार के भी यहाँ से भी पैकेजेस आप ले सकते हो। जो भी आपको पैकेज लेना, ये सारे पैकेजेस आर के अंदर इंस्टॉल्ड है। अब आप ये देखो मेरे पास पैकेजेस में जहां जहां टिक है, दैट मीन्स आई हैव ऑलरेडी लाइब्रेरी। आप देखो मैंने टी सीरीज ऑलरेडी लाइब्रेरी करा, यहाँ पे टिक आ गया कि मैं उस पे काम, मैंने आर को इंस्ट्रक्शन दे दी दैट आई विल बी वर्किंग ऑन दिस। रीड एक्सेल ऑलरेडी मेरे में था ही, बिना रीड एक्सेल के तो हम काम ही नहीं कर सकते। आप देखो मैंने फिन टीएस ऑलरेडी उसको लाइब्रेरी कर लिया, यहाँ पे टिक आ गया। एस बेसिक पे मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, एस बेसिक पे मेरा ऑलरेडी टिक आ गया। जो जो पैकेज आप लाइब्रेरी करोगे, अगर लाइब्रेरी कर दो या फिर यहाँ पे टिक लगा दो, आपका सेम थिंग है। Ma'am, डन मैम। यस यस ma'am, सर। I got an error on FinTS सर आपने when I फिन try to टीएस open the libraries. ऊपर से फिन टीएस आपके पास आ गया? Yes, ma'am, I already installed the packages. हम्म So when I install the packages, there सर is आप no error. But when I try to open the library, I got an error. कोई बात नहीं सर, आप एक जू पैकेज है वो भी इंस्टॉल कर लीजिए, हो सकता है आपके पे ना हो। जू ZOO। ZOO. जू, आप ये देखो, ये वाला मैंने देखो जू पैकेज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जेड पे आते हैं, ये बेस पैकेज होता है सर। सर देखिए जू पैकेज ये रहा, ये टाइम सीरीज का, इरेगुलर टाइम सीरीज का एक ये पैकेज है जू। ये बेस पैकेज है। बहुत सारे बेस पैकेजेस हैं। जो भी आप यहाँ सिस्टम लाइब्रेरी में बेस में देख रहे हो, वो सारे ऑलरेडी आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी आर ने परमानेंटली इंस्टॉल करे हुए हैं। यूटिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, मेथड्स हैं, आपका ग्राफिक्स है, ये ऑलरेडी सिस्टम लाइब्रेरी इज ऑलरेडी देयर। इनको हम बार बार लाइब्रेरी नहीं करते, बट जिस पैकेज में मुझे काम करना है उसको मैं बार बार लाइब्रेरी करूँ। आप एक बार जू कर लोगे, जू बेस में चला जाएगा, वो अपने आप लाइब्रेरी हो जाएगा। नाउ कैन वी स्टार्ट? Ma'am, done. Yes, Done? ma'am. Yes. सर हो जाएगा। नहीं तो आप एक बार, अभी नहीं होगा तो फ्यूचर में आपका एक बार आप दोबारा से आर को रन करोगे, वो हो जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट कमांड समरी। अब मैं आर को क्या कह रही हूँ कि मेरे जो मैंने आपको डेटा दिया है, हमारी डेटा फाइल शेयर प्राइस की ये रही। हमने ये शेयर प्राइस की जो फाइल दी हुई है, इसकी समरी दो मुझे। समरी मींस वो हमेशा जब भी आप कॉलेजेस में भी रिकॉर्ड बनाते हो, क्या मिलता है? एक समरी दो। तो हम क्या करते हैं, जो भी पिछला काम होता है उसकी एक समरी बना देते हैं, रिपोर्ट बना के दे देते हैं। तो दैट मीन्स पास्ट को डिस्क्राइब करो। तो इसकी कमांड है आपकी समरी। तो हमने क्या कहा, समरी दो किसकी? मेरे को पूरी फाइल की समरी दे दो। तो मैंने इसको फाइल का नाम दे दिया, मेरी फाइल का नाम है शेयर प्राइस। मैंने कहा फाइल की समरी दे दो भाई मुझे। तो अब आर ने क्या करा, आर के लिए डेट भी एक वेरिएबल है। इसने सबसे पहले आपको डेट की समरी दे दी कि मिनिमम है, फर्स्ट क्वार्टर, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टर और मैक्सिमम वैल्यू। फिर नेक्स्ट वेरिएबल आया N225 की समरी दे दी, फिर BVST की समरी दे दी, और फिर SSI की समरी दे दी। सबकी समरी दे दी इसने आपको। लेकिन अब इसने यहाँ पे ना आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया, ना स्क्यूनेस दिया, ना कर्टोसिस दिया, कुछ भी नहीं दिया। वो अभी सीखते हैं। डन? डन? यस मैम। Yes, ma'am. अब आप ये देखो, Yes, अब ma'am. मेरे को जब भी आप रिसर्च पेपर लिखोगे या कुछ भी करोगे, आपको डेट तो चाहिए ही नहीं। हमें डेट नहीं चाहिए, लेकिन हमने इसको बोला था समरी दो, तो इसके लिए तो डेट भी एक वेरिएबल है। आर को तो नहीं है नॉलेज ना, आर एक क्या है, एक एआई तो है, इसको नहीं आता। तो हम कह रहे हैं हमें डेट नहीं चाहिए, तो यू विल यूज द कमांड समरी। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि हमें खाली इन इन चीजों की समरी दो, हमें सबकी समरी नहीं चाहिए, डेट नहीं चाहिए। तो यू विल बी यूजिंग द कमांड डेटा डॉट फ्रेम। मतलब अगर आपको एक से ज्यादा वेरिएबल्स के साथ एक साथ काम करना है किसी भी सॉफ्टवेयर में, आप कमांड यूज करोगे डेटा डॉट फ्रेम। डेटा डॉट फ्रेम, देन फर्स्ट वेरिएबल
comma, name of the second variable, and then name of the third variable. And always try to choose it from the drop down menu. जैसे आप 2-3 लेटर्स टाइप करोगे वो ड्रॉप डाउन में आपको दिखा देगा. एंड एंटर. अब आप देखो इसने डेट हटा दी. डन. Madam, is it possible to export this data in a table form? Yes, So that we sir. can put it in. Yes, sir. That is possible. I'll just tell it to you. आपका एक्सेल में हो जाएगा. तो देयर आर 2-3 वेज. हम बड़े आराम से कर लेते हैं. कल मैंने आपको उसका बता दिया था कि हम डायग्राम्स को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं. आई थिंक एवरीवन मस्ट बी डूइंग दैट. डायग्राम्स को सर यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं. आप यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाइए. आपको सेव एज इमेज कर लीजिए, सेव एज पीडीएफ, या फिर क्लिपबोर्ड पे आप करिए. यहाँ से कॉपी प्लॉट करिए और अपने वर्ड पे, एक्सेल पे जहाँ आपको पेस्ट करना है, यू कैन पेस्ट इट. Madam, please explain in English, madam. Okay, sir. Now, the thing is that whenever you are going to export it, what you have to do, you have to just click it over here. You can save it as an image, you can save it as a PDF, or you can just copy to the clipboard, copy plot, and then you can copy it in your Word document. You can copy it in your Excel, wherever you want, you can do it. Okay, now summary is there. Now next thing, if I want to just go for one part, I just need the summary only for n2 to 5. If I want only for one variable, I'll just write the name of one variable and it will give you the summary of only one variable. So it's up to you whether you want a summary of one variable, you want a summary of 3 variables, you want a summary of whole sheet. Done? Can we move further? Yes, ma'am. Now, in this command, with the summary command, you can just find out your minimum value, your maximum value, your mean, median, first quartile and second quartile. But I also need to find out what is my skewness, what is my standard deviation, what is my variance, what is my kurtosis. So for that, your command will be basic stats. I just want my basic stats. And my basic statistics comprises of various things. So first of all, I'll write the command n2 to 5. I just want the basic stats of first variable. Now you can see over here, the first term represents NOBS. NOBS means number of observations. So I have number of observations is 1.31800 E plus 03. Now just tell me whether you have an idea how to read the exponential terms. Anyone who does not have any idea how to read the exponential terms? If you have the idea, that is well and good. If you don't have the idea, you can tell me, I can explain it over here. नहीं पता मैडम. Okay, now see over here, it's written 1.31800 E plus 03. Now plus 03 means this decimal is to be moved 3 place towards right. Now if I move this decimal 3 place towards right, it will be 1318.000. So that means there are 1318 observation, and you can check it from here. There are 1318 entries, 1318 observation. You can check it from the environmental window also. There are 1318 observations. And if you are having this negative sign, see over here in skewness, it's 5.559610 E minus 01. Minus 01 means this decimal is to be shifted towards the left hand side. So actual value is 0.55. So if it is a plus sign, move the decimals, whatever plus sign is given, plus 3, plus 4. So you over here plus 4 is there. So move the decimals 4 place towards right.
If it is -1, move the Ma'am, decimal. sorry to interrupt you, but it's basic stat is part of which package? F basic, financial basic. Basic stats is a package. Basic stats is a command of financial basic package. So F basic, you have to just install your F basic. Now NAS, NAS means not a number. So that means NAS is showing that whenever my data is there, no empty cell is there. That means all the data are there, all the data is present, no data is missing. If I'm going to see this share price, you can see all the data are present. Each and every cell is filled. There is no empty cell in it. There is no empty cell. So R will tell me whether I can work on this data or not. So R is saying that there is no empty cell. Your data is perfectly fine. You can work on it. Next, maximum value, minimum value, first quartile, second quartile, mean, median. Till here, we can also get it from the summary. Now, next thing, sum is given, standard error mean is given, LCL means lower control limit, upper control limit. Now you can see variance is given, standard deviation is also mentioned, skewness is there, and kurtosis is also there. Now all your descriptive statistics are there. Now I have got one statistics. Now I want all the descriptive statistics of all the three variables. So the command will be same, basic stats. The only thing, as I told you, data.frame. I'll be using the command data.frame. Data.frame command says that if I want to calculate any answer for more than one variable, always go with that command data.frame. So N225, your BVSC, and your SSCI. Now you will see that all the three variables are mentioned over here, and you will get all the descriptive statistics. Any doubt till here? Any doubt? Now, suppose if anyone is facing any doubt in exponential, you want that R should not give you answer in exponential, because let's say I'm having a difficulty in learning the exponential term. If anyone don't want R, that R should give you the answer in exponential, this is a command. You have to write the command options SCI Skypen is equals to 999. Please remember this command. Options Skypen equals to 999. Now, once you give this command to R will not give you any answer in exponential term. Let's say I'll just write the same command. Basic stats, data.frame, and enter. Now you will see exponential terms are not there. R has given me the exact answer. Now it's up to you how you want to get the answer, whether in exponential term, whether in the complete decimal form, complete numerical form. Got it? Done, ma'am. Done? Yes, ma'am. Now, next command. Yes, ma'am. FinTS. Now, FinTS dot stats and then your name of the variable. These are the different commands in R. It's up to you, whatever command you want to use it. Now see, FinTS has also given you that you are starting from the first observation. There are 1318 observation. Mean is this, standard deviation is this, skewness is this, kurtosis, minimum, maximum. So that means now you have three different commands. One is summary, one is basic stat, and the third one is FinTS.stat.
So these are the three commands from which you can go with the descriptive statistics. Now, can I switch to stata? Now, stata. Now, if I want to get the descriptive statistics in stata, again, same command. In R, we have used the word summary. Over here also, the same command is summary. So I am saying summarize, and my variable is n225. Now see over here. See, this is very case sensitive. Even R is case sensitive and stata is also case sensitive. So see, in the first command, I have by mistake put capital S. So it has given me that unrecognized command. And after that, I put the small f and it recognized the command. Now again, you will see, if you remember in R also, when I give the command summarize, it always gives me the mean, maximum, and standard deviation. But it has not given me variance, skewness, kurtosis. In R also, the summarize command means only limited value. And after that, we use basic stats command. So now for here also, just write summarize again. Summarize n2 to 5, whatever variable you want, and then say put comma and then say I want the detailed one. Now it will give you the all the values. Now you can see over here. Number of observations are there, mean is there, standard deviation, variance, skewness, kurtosis is there. Every command will be there, every result will be there. So it's up to you which kind of results you require. If you require only the small summary, you can go with the command summarize. If you want the complete details for the skewness and kurtosis also, you can just write the word detail. Done? So whatever we have done in R, we require, there is one more package, H miscellaneous, but you can leave it because these three are enough for you. Base package that we don't have to install, and for the base package, your command is summary. Your basic package, that means F basic, your F basic package, for this the command is your financial basics, basic stat, and then for fints command package, your command is fints.stat. And if you want to install the package H miscellaneous, for this you have to give the command. I can write over here also. You can just write describe. The command is describe, and over here name of the variable, let's say our name of the variable is n225. If you can just go for this package also, just give the command describe n225, you will get the result. So I'll be giving you this complete PPT. So these are the packages and these are the commands. This is your command for stata. The first thing we have done, import the Excel file, then you have to give the command ts set date and then summarize and name of the variable and summarize name of the variable comma detail. Now, any doubt till here? No, madam. Now, the first challenge was that how we are going to show the diagrammatic representation so that I can just able to know that how to create the model. Now, second challenge in time series is how to model a time series for a forecasting purposes. You remember yesterday we have three things. The first thing is we have to forecast. We can forecast with the help of time series that in the future, suppose my sales are this much. I have the previous data for last 10 years that these are my sales value. How I'm going to forecast the future sale value. So again, your sales is your time series data. So I'm going to predict future things now.
Second, we did it that how we are going to estimate, how we are going to estimate your mean, we are going to estimate our variance. And third, we learned that how we are going to find the relationship. So these are the three problems that we are going to face it. So what we have done, the possible ways to model a time series for forecasting purposes, a time series may be a function of trend. We have done yesterday that there is some trend over there in a time series model. Let's say we are done with a seasonal trend. There are cyclical trend, there are seasonal trend, there are irregular trend, that is your stochastic trend. So the first thing is there is always a trend. And what we have to do, we have to find out that trend. If we are able to judge the trend, let's say if I'm going to say the sales, what is my future sales? And I am seeing that from last 10 years, every year 10% sale is increased. So that means I can determine that trend. I will name it as a deterministic trend. And suppose if from the last 10 years, your sale is increasing, sometimes it increased by 10%, sometimes it increased by 15%, sometimes it increased by 20%. So that means it is increasing randomly. Sometimes it's increased by 2% only. So it's a random. So over that, I will name it as a stochastic trend. So you have to see what kind of trend is that. And accordingly, we are going to inform the software. This is a deterministic trend. This is a stochastic trend. I have to go with the stochastic trend. No, I have to go with the deterministic trend. And that can be judged with the help of the diagrammatic representation. You have your data, plot it, you will be able to judge whether this is a deterministic trend or whether this is a stochastic trend. So first thing is trend. We have to remember about trend. Don't forget about the trend. Next thing is that time series may be a function of its own history. As I told you, your today's advertisement, or you can say your today's sale, is depending on its previous sale also. Your today's stock price is being affected by its previous day's stock price also. So that means your past always determines your future. If I'm saying your marks, tomorrow you are having your marks. So if you are going to study today, then only tomorrow you are able to get good marks. So always your future is always depending on your past. We have done our descriptive statistics. Your past defines your future. If you have a qualification, good qualification, you will have a good job. That means your past is describing your future. So, or I can say my past is describing my future, or I can say my future is depending on my past. It's one and the same thing. So what I'm saying, time series is a function of its own past, own history. So your past has a major role in your future. Let's say I'm giving you a small example. I'm saying that I am having a cancer, right? And cancer is, you can say, hereditary also. So cancer is depending on my previous ancestors also. So it is depending on my past and on my ancestors. It has its own history. So your future can depend on your past. I'm not saying it's always, but it can depend on its own history. It can depend on its own history also. It can depend on someone else's history also. Someone else's history means, I gave you the example for sales. If I am having the sale of today and I gave the advertisement 3 years back, or you can say 3 months back, the sale of April will be depending on the advertisement given in the month of January. So over here, sale is not dependent on its past. It depends on some other variable past. Advertisement is an exogenous variable. It's not sale, it's an exogenous, some other factor. Sale is depending on advertisement. So advertisement is another factor and not in today's date advertisement.
Today is the April month, and advertisement is not depending on the sale is not depending on the advertisement of April. It is depending on the advertisement that I gave in the month of January. So now today's sale is depending on the advertisement sales of January. So history of January for advertisement has some role for the sale of today. So time series may be a function of some exogenous variable. It's not that always the sale will depend on its own. It will depend on some other variables also. So it's depending on the exogenous, that we name it as an independent factor. So whenever we are doing time series, first thing we have to see whether there is a trend or not. If there is a trend, remove that trend. Next, you have to see whether it is depending on its own history or not. If it is depending on its own history, you have to find out which lag term it is depending. After that, we will find out whether it is depending on its own or there are some other factors also on which my product is depending or my variable is depending. Let's say I'm saying my share price. Share price is depending on its past also, but there are various other factors. Let's say COVID-19. COVID-19 came, the share price fluctuates. Or your Russian-Ukraine war came, your share price fluctuates. Or even let's say demonetization came, your budget came, or even the company is going to split the shares, or company is going to introduce the dividend, company is going to give the interim dividend. So there are various factors through which the share price will depend. So share price is depending on its own past also, it is depending on some exogenous variables also. So my forecasting will move around these three things. Now, if time series is a function of time, we represent it by t is a function of time. If it is a function, see over here, next, the first thing is the function, time series is a function of as the time changes, your time series changes. Time series is a function of its own history. So yt is depending on yt minus 1. And time series is a function of exogenous variable also. So yt is depending on xt. X means your some other variable, some other independent variables. So yt is a function of xt also. Any doubt till here? Now in this diagram, can you say what kind of trend it is? There are trends. There are fluctuations over there. What kind of trend it is? I can determine it. Yes, can I determine this trend? Yes, can anyone can tell that I can determine this trend or not? No one? Yes, no one can answer. No, madam, we don't know. See, sir, we cannot determine this trend. Determination, I told you that every year, either the prices or your sales or anything else, let's say employees retention or employees switching, employees are leaving your organization. Today we are having 10 employees. Yesterday again, next day again 10% of the employees left the organization. 9 are there, and then again next day again 10% left. That means 0.9, or you can say one employee has again left 8. So that means I can determine it. When there is an equal distribution at equal time interval, I can determine it. But if the equal distribution is not there, I cannot determine. Over here, you can see I cannot determine the trend. So that is stochastic, random. There are random changes. I am not able to determine. Now let's move to R and just see. Now I have given you one Excel sales detrending.
just import this Excel. Sales detrending. Just attach this file, sales detrending, and plot the diagram. Now you all know how to plot it. Plot the TS and let's say sales. Are you able to get this diagram? Or next diagram, plot.ts. And turnover. We have two variables over here. Now you got this diagram, sales or turnover. You can make the diagram for any one of these. Now, if you will observe, the sales is moving up, then down, then up, then down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Now you will see the similar kind of patterns are there. It's moving up, down, up, down, up, down. So this is your deterministic trend. It's moving up, but I can determine it. Trend is there, but I can determine that trend. So whenever you can determine the trend, that will be named as a deterministic trend. But if we plot, let's say I plot the diagram for N2 to 5. Now, if you will see this diagram, I cannot determine it. You cannot determine the trend. Sometimes it's moving up, then down, then again so much up, then small variations are there, then down, again small variations, down, and again increases. So this is a random diagram. I cannot determine it. So this is non-deterministic. This is stochastic. Over here, trend is there, but it is stochastic. And in this diagram, trend is there, but that is deterministic. Got it? Any doubt in this? No doubt? Can I move further? Yes, ma'am. Now, whenever there is a deterministic trend or whenever there is a stochastic trend, we have to remove this trend. Simply remove all these trends. Or even I can say trend is there, my data is non-stationary. Now let's move to the stationary part. Why we are saying my data is stationary or not? Let me move to the stationary part. Okay, now what we have learned that over here in this diagram, if you will see, there is a random variations are there. Again, in this diagram, you have random variations are there. Again, if you will see any diagram, random variations are there, and there is a stochastic trend. So that means my time series is not stationary, and I cannot work on this trend. We always have to remove the trend. If you have ever having any knowledge of statistics, this is known as moving average. Your data is moving, always moving upward or downward, but there is a moving part over there, and we never work on moving part. No one can study on the moving data. If you have learned, anyone have learned economics, we have some assumptions in that. An assumption is that if I'm going to study one thing, every other thing will be constant. For example, if I want to study and some music is also there, my concentration will not be in my study. I have to stop that music to concentrate on my studies. So I cannot work on multiple things together. तो कहावत है ना, बहुत सारी एक
नाव में, बहुत सारी नाव में सवार होगे तो एक में भी नहीं जाओगे. So that means what I have to do, I have to keep it constant. I cannot work on moving data. The data is not stationary. I have to convert that data into stationary. So this is my main problem. I cannot work on time series data. If the trend is there, I cannot work. So my culprit is non-stationarity. I'm not going to work on non-stationarity data. So what is my problem? My answer will be the spurious. Everything is regression, that I'm going to explain it. So everything is spurious. That means my results are not blue. So what I have to do, my first step is to convert the data into stationary. To avoid all this spurious regression, one must ensure that series is stationary. Whatever data we are going to learn, on whatever data we are going to study, we have to remove the trend. If it is a deterministic trend, remove the trend. If it is a stochastic trend, remove the trend. So now let's start with the word stationarity. What do you mean by word stationarity? Now, stationarity means that something constant. That we will not work on trending data. If the data is moving, we cannot work on trending data. We have to work on the constant data. Now, whenever we are talking about word stationary, we have two kinds of stationarity, weak stationarity and strong stationarity. Now, let me tell you why we are working on stationarity. Now, stationarity word comes from the word station. Now, station, we are all aware about railway station, bus stops. That means these are your airports. These are the stations. Railway station is a station where we are going to board the train. Your bus stop is a station where we are going to board the bus. And your airports are the stations where we are going to board the plane. Now, just tell me, can you board on a moving train? Can you board on a moving bus? Can you board on a moving plane? We cannot. If I have to board on a train, the train should not be in a moving direction. It should be on a standstill direction. That means आपकी ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होनी चाहिए. Then only you can board the train. Your bus should be there on your bus stop. It should be in a standstill, static position में होनी चाहिए. Then only you can board it. Your plane should be there on the airport. Plane should be standing on the airport. Then only you can board your plane. You cannot board on anything that is moving. अगर ट्रेन आ रही है बहुत तेज स्पीड में, we cannot board the moving train because it is in a speed. We have to stop that train. So that means we will always work. Maybe in our real life, data is my real life data. I cannot work on moving data. I have to make it stationary, make it in a constant position. And in data, the constant means either your mean is constant, your variance is constant, your skewness is constant, your kurtosis is constant. If all the descriptive statistics is constant, we name it as a strong stationarity. But if all the descriptive statistics are not constant, we name it as a weak stationarity. And always remember, stationarity always works on a long-term data. If your data is short-term, that means you just have a data for, let's say I want to work on the daily data. If you have a data for 1 month, that means 1 month means in 1 month, hardly 20 days stock market is working.
If you have a data for only for 20 days, so you will not able to judge whether the data is stationary or not. The same example I'm going to give you of a moving train. If the train is not in a high speed, if train is on a low speed, train ने बस start ही करा है चलना, we can board that train also. चल रही है, धीरे 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 ट्रेन चल रही है, वो मूविंग डायरेक्शन में है, बट स्टिल वी कैन बोर्ड. अगर ट्रेन बहुत लंबे से आ रही है, दूर से आ रही है, बहुत तेज भाग रही है, वी कैन नॉट बोर्ड. So that means you have to see whether you want to work on strong stationary, you want to work on weak stationary. But in time series, we always work on weak stationarity. We will never get the strong stationarity. So your weak stationarity means either you have a constant mean, you have a constant variance, or your covariance function. Covariance function depends on the time difference between values of variables. So we should have either of these. If you have all these, then also we are working. But we can get either of these. Now see this diagram. Now you will see this brown line is my mean, and this blue line is upper control limit, this is lower control limit, and these are the prices, stock price or any sales price that is varying. My sales is varying. This is time is moving, my variations are there, but you will see that variations are constant. They are moving within these blue lines, lower and upper control limit. So this is a diagram where there is a non-stationary mean but stationary variance. Variance is constant. It's either moving 10% up, above, 10% down, or 5% above, 5% down. It is constant. Your next diagram. Here the variance is not constant. Over here you can see the difference is more, and here the difference is less. So variance is not constant, but mean is constant. You can draw a straight line. Your mean is constant. Mean is there. So this is a stationary mean, but non-stationary variance. Now, in this, if I'm going to draw a straight line, all the points will not be on a straight line. So it is neither stationary mean, neither stationary variance. So this is non-stationary mean or non-stationary variance. So if you are getting this kind of diagram, that will be your non-stationary data, and I cannot work on this non-stationary data. Excuse me, ma'am. Yes. The slides are not visible. It's not moving. Slides are not visible. It's not moving, ma'am. I can't see the diagram. Let me share it again. Now, are you able to see it? Yes, madam, visible. It is visible. Visible? Okay. So, we were just doing that. This is my non-stationary mean. Non-stationary mean. Non-stationary. Ma'am, please mute it. Please mute yourself. Now see, this is a non-stationary mean. Now you will see that the mean, this is a mean that is moving, that is increasing and then decreasing. So this is a non-stationary mean, but variance is constant. It is again the 10% above, 10% down. It is constant. Next diagram we were talking about that mean is constant, but variance is changing. So this is stationary mean and non-stationary variance. And in this diagram, it is neither stationary mean, non-stationary variance. So we always work on stationary. Either mean should be stationary or variance should be stationary. And if you will see this diagram, mean is also stationary and variance is also stationary. There is a constant change in variance and mean is constant. Any doubt till here?
Any doubt? No? Oh, madam. Okay. Now, again, how to check whether my data is stationary or not. I told you one way to check is to make a diagram. By diagram also I am able to judge whether my data is stationary or not. And next is by your test. So we have different tests to check it whether my data is stationary or not. So first test is your ADF test, Augmented Dickey-Fuller test. The full form is Augmented Dickey-Fuller test. Second is your PP test. Philip Perron test. And third is your KPSS test. So we will be working with these three tests to check it whether my data is stationary or not. Diagrammatic we have already done. That my data is non-stationary. We have decided that my data is non-stationary, trend is there. So now we have to convert this data into stationary to work it further. So that means this file, this share price file is non-stationary data. I cannot work on this data. Now I will first convert this data into stationary and then we are going to learn it. Now, first of all, my hypothesis, how to create the hypothesis. So first of all, for ADF, everyone knows H0 means null hypothesis. So null hypothesis says that data is non-stationary and your alternative hypothesis says data is stationary. So we will be creating these two hypotheses. If my test is saying H0, we will go with H0. If my data is saying H1, I'll accept H1. Now how to do it? Now command is adf.test and then your name of the variable N225. So first I am doing for Augmented Dickey-Fuller test. Now you will see the abbreviations also, ADF, Augmented Dickey-Fuller test. Your commands are very simple. You don't have to cram it. Once you are going to use it in your daily life, you will remember it. adf.test and the name of the variable. Now you will see the result over here, your p-value. The thumb rule says if p-value is less than 5% level of significance, we will reject, or you can say we will not accept null hypothesis. That means if my value is less than 5%, I will go with null hypothesis. I will not reject. If the p value is less than 5%, I will reject null hypothesis. If my value is more than 5%, I will accept my null hypothesis. Now over here you can see that p value is 0.49, which is more than 5%. 5% means 0.05. So I can write 5% means your 0.05. If your answer is less than 0.05, go with H1. If your answer is more than 0.05, go with H0. So my data is saying, my test is saying my data is non-stationary. And you will see in the test also, they are already given alternative hypothesis means data is stationary. So it means null hypothesis means data is non-stationary. And even the diagram we have made it for this N225, you can see the diagram is also saying there is a trend, data is non-stationary, and test has also given me the data, my data is non-stationary. Any doubt till here?
Now for the next one, PP test. Ma'am, could you please explain this part again? Which one, This sir? this hypothesis testing part, ma'am. Okay, hypothesis says that, see, if you are going to say, I have given the exam, there will be two possibilities, whether I will pass or whether I will not pass. If I'm not going to pass, I can name it as a fail. Otherwise, I can say, I will pass, I will not pass. There are only two possibilities for anything. So H0 is mainly a negative term. So that's why I have to test whether my data is stationary or not. Stationary means whether my data has some constant mean or constant variance or not, or whether all the mean is also moving, your variance is also moving, because I have told you that we cannot work on non-stationary data. My data should be stationary. Either there should be mean should be constant or variance should be constant. Something constant should be there, because I cannot board my data. I cannot work on that data. So what I have done, I have created two hypotheses. One, the data is stationary, and Ma'am, one, the sorry data to is interrupt you, but can you please explain like the bottom lines, which is alternate hypothesis showing stationary, what it depicts? सर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखा है कि H1 का मतलब, देखो हम H0 को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, H1 को Agree. हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जब भी आप कोई भी टेस्ट लगाते हो तो वो आपको हाइपोथेसिस लिख के दे देता है, कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सी हाइपोथेसिस क्या होती है। तो उसने लिख के दे दिया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब है कि डेटा स्टेशनरी है, तो इट्स ऑटोमेटिकली मींस नल हाइपोथेसिस मींस डेटा इज नॉन स्टेशनरी। And whenever you are writing a Okay, research so paper, that you means have to write it's it. not a part of result. It is just No, no, no. explaining कि हमने क्या लिया है. Yes, sir. It's just the information. It's not Okay. a part of result. P-value, either you can check it from the P-value or you can check it from a Dickey-Fuller test. But normally for Dickey-Fuller test result, you should have a table of Dickey-Fuller test. So I don't think you all are having that table. So that's why you won't be able to do it from this. And lag order 10 means whenever we are saying that, अभी हमने करा था कि हमारी जो मेमोरी होनी चाहिए वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, वो फाइनाइट होनी चाहिए। दैट मीन्स एक लिमिट पे आके वो खत्म हो जानी चाहिए। तो ओवर हियर मैक्सिमम वैल्यू दैट आर इज टेकिंग इज द 10 lakh। तो इसने लिख दिया कि आपकी जो वैल्यू है दैट इज इनफाइनाइट, यू कैन ऑल्सो जज इट फ्रॉम हियर। सो दैट मीन्स ऑल द थ्री results are saying that my data is non-stationary. I'm going to accept H0. Now this is the result for augmented Dickey-Fuller test. Now let's go with the PP test. PP test, in PP test also H0 means data is non-stationary. Madam. Yes sir. So madam, here P value is greater than 5%. Yes. So we have to accept H0. Data is not stationary. Not stationary. So that means I cannot work on this data. But I have to convert. Here it comes as stationary. Alternative. No. It's not answer. Alternative hypothesis is stationary. It's not an answer. It is just an information. It's just the information that your R is giving. That we have two hypotheses. One is null, one is alternative. So some tests will give you the null hypothesis is this much. Some tests will write alternative. So opposite will be the next hypothesis. It's just an information, sir. Now for PP test also, H0 means data is non-stationary and H1 means data is stationary. So now let's do it for PP test. PP dot test and N225. Again, you can see the P value is more than 0.05. So this is also saying that data is non-stationary. So both the tests are giving me the same result. Even the diagram is also giving me the same result. If you want to write a very good paper, you are doing your research, you are doing your PhD thesis, you have to show it. Because in some of the results or augmented Dickey-Fuller test, they will say that my data is stationary. Philip Perrin will say my data is not stationary. So we have to validate our results. Can I move further with KPSS test?
Yes, ma'am. Ma'am, Yes, sir. ma'am, Phyllis-Barron test is a non-parametric test. Yes. So, Everything. Yes. So should we our have to check the data first? we have to check the data. We have to check whether my data is stationary or not. For time series, we No, have to always ma'am, check it. I am asking that should you have to check the data is parametric or No. non-parametric, because You don't have to. You don't have to. You don't have to check okay, your data is parametric or non-parametric. okay. Now, for KPSS test, do Hello, remember ma'am. KPSS. Excuse me, Yes, ma'am. yes, sir. Yes, sir. Hello, ma'am. If ADF test and PP test shows different results, then what to do, ma'am? We always go with ADF. You have to support it by your literature. If you will see any research paper, Okay. you have to say that yes, you have to quote the research papers over there. That these are that I have studied on these variables and I have taken out these variables from the literature review. And 90% of research papers are saying that ADF is validating the result. So I will go with the ADF. Okay, thank you. Now, for KPSS test, H0 means your data is stationary. And H1, your alternative says data is not stationary. Now, see, opposite results are. The hypotheses are opposite in KPSS test. So don't get confused. The first thing is that your alternative hypothesis and null hypothesis should be clear in your mind. Which test is representing which thing in null, which thing in your alternative. Now, if I go with KPSS test, kpss.test and then N225. Now see over here, your p-value is 0.01. P-value is less than 0.01, which means I will go with the alternative hypothesis. And alternative hypothesis is data is not stationary. So that means all the three tests are saying that data is not stationary. Ma'am, Yes. if there is a structural break, then ADF test is not ADF valid the test will result. not. No. It will valid the results. And ADF test is only telling whether the data is stationary or not. But structural break is telling you that how the variation starts, from where the variation is starting, which is the point where the variation is taking more. The data is more variable than the previous one. स्ट्रक्चरल ब्रेक आपको बस ये बता रहा है कि शॉक्स कहाँ कहाँ पे आए हैं आपके डेटा में, कि आपका डेटा की पिक्चर ही चेंज हो गई है. So, ma'am, what is the if the data has a structural break? So, what is the best test for the data if I wanted to make it stationary? Same thing. Structural break has no relationship with your stationarity and non-stationarity. Structural break only tell you whether you have to take the complete data or you have to split your data in different parts. Okay, ma'am. Okay. So now you will see that all the data, all the three tests are showing you the same result. And similarly, you can go with the different variables. Now, next thing, how I'm going to convert the data into stationary one. So stationary can be either I will be having a constant mean, or I will be having a constant variance, or I will be having a constant covariance. But in time series, you will get hardly constant variance or hardly constant covariance. But you will always get the constant mean. So we will work on constant mean. So whenever we are having that time series data, we have two options. So I'm writing the two. Yes, sir. Madam, please repeat, madam. See, sir, whenever we are having a non-stationary data, what we have to do, we have to convert it into stationary. And we have learned that
we can either, whenever we are converting into stationary, there are two kinds of stationary, either a strong stationary or a weak stationary. So we always go for a weak stationary. That means we always say that either mean should be constant or variance or covariance. But in time series data, you will hardly find any constant variance, but you will always find the constant mean. So we will always try to go with the constant mean. We will work on a weak stationary. Mean should be constant. Now there are two options whenever we are converting the data into stationary. The first thing, either you have your data in price form or your data will be in non-price form. If I'm going to study stock price, it is in the price. That means in some currency it is there. If I want to predict the sales, it is in currency form. If I want to predict the interest rate is never in price. If I want to study the population growth of population, it is not in price. If I want to study the how many COVID cases will come, it is not in price. So either your data will be in price or your data will be in non-price form. So first thing, if the data is in price, how we are going to do it? If your data is in price, always take the log difference. And if your data is in non-price form, always go with a simple difference. Got it? So madam, log difference, is it we need to convert into logarithms, natural Yes, logarithms? sir. We have to convert it into natural logarithm. And whenever, if you have a knowledge of log term, if I'll say log x upon y, logarithm means log x minus log y. So it automatically difference over there. Okay, and how to convert into simple difference? I'm just telling you how to convert it. Simple difference means x minus y, sir. We just don't have to take log. R will do everything for us. We don't have to worry. Now, see, price, you just have to remember, if your data is in price, go with log difference. If your data is in non-price, go with the simple difference. Now, how to, first of all, I'll go with your log difference. How I'm going to go with the log difference. Now, what I have to do, I have to store the data. I will store some data in some variable name. For example, over here in share price, I have given the name of the variable. This is my price data. Now, what I am doing, I am converting into return data, into log data, or I can say L log of N225. I have to convert N225 variable into log. So I have to give some name. So let's say I'm giving the name return. Rn225. I am saying that I am converting the non-stationary data into stationary and store that data with the name of the variable of Rn225. मतलब एक और वेरिएबल बना दो यहाँ पे जिसका नाम दे दो Rn225. So now the command will be log x is equals to if log N225. So your command will be Rn225 is equals to difference of logarithmic term diff log N225. Done. Done. Once you will convert it, now you can see it over here. The variable is created Rn225, and whenever we are taking difference, the first term will automatically remove. Because if there are two numbers, suppose this is 1, this is 1, if I'm going to do it 1 minus 1, it will be 0. So one term will automatically remove. So that's why it's 1 3 instead of 1 3 1 8. Now I'm left with 1 3 1 7 observations, and this is my
answers. All the observations are there. Since the space is not there, so you are not able to view all the terms. Now, next, I'm also going to convert, let's say RBVSP. I'm just giving the name RBVSP is equals to diff log BVSP. Now you can see over here, this variable is also created RBVSP, and let's say I just want to convert the last also RSSPI is equals to diff log SSCI, and this is also created. Now you will see that all the different variable name is there, but I want all these three in one file. That means over here you will see my file name is share price, and under share price there are different variables N2 to 5 BVSP and SSCI. That means this is one Excel sheet. In one Excel sheet there are three rows which are representing N2 to 5 BVSP and SSCI. I want to create one sheet only, but over here I have created three different sheets. Now, how to create one sheet? I want all the variables in one sheet only. So you will use, I'll just give the command X. I'm just giving the name of the sheet as X. You can give any name. So X is equals to cbind. I am saying cbind means combine all the three things. Cbind R N2 to 5, comma R BBSP, comma R SSCI. Whatever name I have given, I am saying combine all these things. Now see, it has created the file, and it is saying that the variables observations are starting from 1 till 1317, and all three observations are there. Now you can view it. So I want to see that whether it has created or not. View X. Now see, once I have created, it has converted all the variables into one sheet, and name given is X. The name of the Excel is X. Now, are you able to do it? Yes, ma'am. Everyone? Any doubt till here? Nothing? No doubt? Ma'am, you will provide the list of these commands, na? Yes, I will provide you. Okay, ma'am. अब most important thing, suppose करो now it's going to be 11. I'm going to close this workshop. अब आगे तो मैंने कुछ कराया नहीं है, अब मुझे क्या करना है, इस वाली शीट को जैसे ही मैं अपना R बंद करूंगी, आई विल नॉट सेव. मैं अपने लैपटॉप में सेव नहीं करती कभी भी डेटा, बिकॉज बहुत स्पेस खाता है, तो आई नेवर सेव इट. सो आई क्लिक डोंट सेव. तो क्या होगा, मेरा जितना भी मैंने आज काम करा है, माई R विल रिमूव. तो नेक्स्ट डे जब मैं आऊंगी तो मेरे को दोबारा से ये सारा काम करना पड़ेगा. But for you, you want to save it, you can save it, but I will not save. So what I will do, I will download this Excel in my laptop. भाई मैंने इतना सारा काम R में कर लिया अब तक, तो अब मैं अगर R बंद कर दूंगी तो मेरा सारा डेटा चला गया. तो मैं क्या चाहती हूँ, ये वाला जो मैंने सारा कन्वर्ट करा है, इसको मैं अपने लैपटॉप में एक एक्सेल फाइल में सेव कर लूँ. Someone was asking me how to export the data. So this is my return series. I want to export my data. Now how I am going to export it? Now for that, see, R will export your command in CSV file. Once it is converted into CSV file, I can convert it in Excel in my system very easy. So CSV file means your Excel only. So you have to write the command. I am giving the command to R, write CSV, write dot CSV. Now R is saying, किस फाइल को मैं CSV में convert करूं? So my name of the file is X. I am saying ये जो X file मैंने बनाई है, convert this X file into CSV and download it into my system. क्योंकि R बंद करते ही सब गायब हो जाएगा. कॉमा मैंने इससे कहा convert this X file into CSV. अब वो पूछ रहा है convert तो मैं कर दूंगा, नाम क्या दूं आपके सिस्टम पे CSV फाइल का. तो लेट्स से मैंने इसको नाम दिया
conversion return series. Conversion return series dot CSV. आपको जो भी नेम देना है, यू कैन गिव योर नेम. व्हाट आई एम सेइंग कि x वाली फाइल को, जो x वाली फाइल है, उसको आप कन्वर्ट करो CSV में एंड जस्ट गिव दिस नेम कन्वर्जन रिटर्न सीरीज CSV, कॉमा रो नेम. आई एम सेइंग कि जो वो कह रहा है रो नेम जो आपको देने हैं, आई एम सेइंग डोंट गिव एनी रोज नेम, false. Done. Everyone has written this command. Enter. अब ये वाली जो मेरी पूरी शीट है, ये मेरे लैपटॉप पे सेव हो गई है. नाउ अब कहाँ सेव हुई है, अब आपको कैसे पता कि कहाँ पे सेव हुई है? So for that the command will be, अगर आपको पता है R डायरेक्टरी कहाँ पर होती है, कहाँ सेव हुई है ऑटोमेटिकली. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना सिस्टम, आप मेरे इस पे देख पाओगे. यहाँ पे आप देखो, मेरे को पता है मेरे डॉक्यूमेंट्स में चली जाती है. जो भी मैं फाइल सेव करती हूँ मेरी डॉक्यूमेंट्स में चली गई. यू आर एबल टू सी माई फाइल और नॉट? मेरी आपको ये शीट दिख रही है डॉक्यूमेंट्स वाली? यस मैडम. Yes, तो आप ma'am. यहाँ Yes, पे ma'am. देखो डॉक्यूमेंट्स में ये कन्वर्जन रिटर्न सीरीज आपको दिख रहा है. आपको डेट दिख रही है, आपको टाइम दिख रहा है. अब जैसे ही मैं इसको खोलूंगी, मेरी कन्वर्जन रिटर्न सीरीज, मेरे को पता है कि मेरा यहाँ पर सेव होता है, मेरी सारी पूरा डेटा मेरे पास सेव हो गया. आप देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 1318. 1318 इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को नेम दे दिया, क्योंकि मैंने उसको फॉल्स दे दिया था. जब मैंने कमांड दी थी, मैंने उसको कह दिया था कि नाम वाम मत दे, मैं खुद कर लूंगी. उसने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को नेम ना देके उसको भी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन समझ लिया. अगर मैं ट्रू कर देती तो ये नेम ऊपर आ जाते और यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता. मेरी पूरी एक्सेल हो गई. अब क्योंकि फर्स्ट टाइम आप अपने एक्सेल पे करोगे तो आपको नहीं पता कहाँ पर सेव होगा, तो अब आप क्या कमांड लिखोगे, आप कैसे पता करोगे कि आपके इतने बड़े सिस्टम में कहाँ सेव हो गया है? तो फॉर दैट यू विल से, आर को कहोगे कि मुझे बता दे कि मेरा कहाँ पे सेव हुआ है. Madam, R, please in English, madam. okay sir. Now the problem is that whenever you are saying to the R, so R will tell you where the R has saved your data. So get WD and parentheses. So once you will write the word get WD parentheses, it will give you the result where it has saved. You will see that it's in my C drive, users, Himani, and documents. So I have just shown you the documents part. In my documents part, it is being saved. So it will give you the path where the data is being saved. And from that path, you can just take it out your data. So that means R has exported your data from R. Now it is being saved in your system. Now next time, whenever I am working on R, if I want to work on stationary data, I will directly upload this file in R and I will start working it. Otherwise, first of all, I have to convert. If I'm going to upload the original time share price series, I have to first of all convert it into the stationary and then only I can work it. So that means whatever steps we have done it today, I have to redo all the steps. So just to avoid all these steps, I have saved these data in my R. Now I think everyone is able to export the data also. Any doubt? No, ma'am, done. No, ma'am. No, ma'am. No, madam. Done? मैडम, Yes, sir. वो अपन जो एक्सेल में जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट जो टेबल फॉर्म में लेते हैं, वैसे इसमें कैसे ले सकते हैं फिर? Sir, either that you can do it by copy paste, just extract the data. For example, I want to just save all my results. I will just copy it over here, just press Control C and Control V in your whatever documents you want to save it. Or the next is we can use the notepad also. If you are going to save it in the notepad, then directly you can convert it into Excel. That I can teach also. ये साइड में जो ये इमेज दिखाई दे रही है,
ये इसी फॉर्म में, टेबल फॉर्म में नहीं डिस्प्ले होगा यहाँ पे? विच वन सर? ये वाला? ये जो अभी ईयर 225 का जो चार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला सर, ये वाला हाँ। डायग्राम विल सेव एज इट इज. You have to do just export it, copy to clipboard, and you just copy it. Or for example, I'll just open my Word document. Let's say I'll just open another document over here. Let's say I'll just open a new document. So what I have to do, I have just pasted over here in my system. I have to just paste the special. The same diagram is pasted over here. I don't have to do anything. अभी ये जो पिक्चर आपने यहाँ पे लिया है, ये टेबल फॉर्म में वो डिस्क्रिप्टिव डेटा ऐसे ले सकते हैं अपने यहाँ पे? Which one, sir? Which data? डिस्क्रिप्टिव डेटा जो रिजल्ट आया है। Descriptive. Yes, yes, sir. That also you can just copy and paste over here. तो as it is फॉर्म में आ जाएगा. एज इट इज फॉर्म में आ जाएगा वो? हाँ, you just copy and paste over here. टेबल फॉर्म में नहीं होगा वो? Table form में, for that you have to first of all put it in the notepad, and from notepad you can convert it into Excel. It will come in the table form also, but with the help of notepad only. First of all, paste it into notepad, and from the notepad paste it into Excel. We can do that also. Okay. So thank you very much for today's session. So I'm just closing it.